हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। ये है मैंने जो आपके लिए प्रॉब्लम फ्रेम किया है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी v2, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी u2 so that the objects will make 90 degrees with each other at any point in time while falling अंडर ग्रेविटी। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, साइमल्टेनियसली हमने इनको प्रोजेक्ट किया। हमें देखना है कि ये u2 कितना होना चाहिए ताकि एट एनी पॉइंट इन स्पेस द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटीज इज 90। ये हमें देखना है कि ये u2 जो है दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि वो स्पेस में किसी पॉइंट पर उनका जो वेलोसिटीज का एंगल है वो 90 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको कंपोनेंट भी कर सकते हैं। हाँ, ये एंगल दिया है 53 डिग्री। आप u2 और u1 के कंपोनेंट्स क्या होंगे उसका तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। u2 के आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट वेक्टर्स यूज करूंगा विदाउट यूजिंग कंपोनेंट्स, बिकॉज कंपोनेंट अगर मैं करता हूं दैट विल वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। So what is the condition that the two velocities be perpendicular to each other? The condition for two velocities to be perpendicular to each other is v1 vector dot v2 vector should be 0. Here, their dot product should be 0 in space while they make angle 90 with each other. So what is v1? What is v1? That is u1 vector minus g, j and t. It is same thing as u plus at, मगर in vector form u1 vector minus acceleration का direction j into time. It is the same rule as final velocity is equal to initial velocity vector plus acceleration vector into time. ये वाला वो formula है। And what about v2? v2 is equal to u2 vector minus g, j and t. Same thing. Initial velocity प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये जी जे इसलिए है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो माइनस जे डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स। अगर आप ऊपर वाला डायरेक्शन जो वाई लेंगे जे, तो ये माइनस जे हो गया। तो इट इज ये फार्मूला और ये फार्मूला जो है वो ये वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मगर इन वेक्टर नोटेशन। अब एक्सेलरेशन है माइनस जी जे विद गिवन द डायरेक्शंस, इसका डायरेक्शंस भी हम दे रहे हैं यहां पर। तो इनको डॉट कीजिए, v1 डॉट v2। तो यहां से इनका डॉट कीजिए, दैट इज u1 माइनस जी जे टी डॉट करके u2 माइनस जी जे एंड टी। तो ये तो हो गया 0, बिकॉज द कंडीशन दैट इफ दे make 90 with each other at any point in space, then their dot product of their final velocities or velocities at any time should be 0. So इनका dot कर दीजिए आप, u1 dot u2 minus u1 dot j ये वाला into gt minus g dot u2 j dot u2 dot तो वेक्टर का होगा ना, तो gt एंड प्लस लास्ट में जी स्क्वायर जे डॉट जे इज 1 इंटू टी स्क्वायर 0 के बराबर। तो 0 इज इक्वल टू व्हाट इज u1 डॉट u2, इनका डॉट प्रोडक्ट एंगल 53 के बराबर है, दैट इज u1 u2 cos ऑफ 53 माइनस व्हाट इज u1 डॉट j, u1 डॉट j वो हो गया 0। u1 को जब आप j से डॉट करोगे 0 हो जाएगा, माइनस व्हाट इज j डॉट u2, तो u2 को इसके साथ डॉट करो, वो हो गया u2 इसका ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल वाला कंपोनेंट जब j के साथ डॉट करोगे दैट इज u2 साइन 53 जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं ऐसे करता हूं, ये देखो u1 तो है पता है वो, दैट इज 10 u2 10
u2 cos 53, that is 3 by 5, minus u2 निकालना है sin 53, that is 4 by 5, g is 10 into t, plus g square, that is 100, t square is equal to 0. So it becomes quadratic in 2 or 2. It becomes quadratic in time. It becomes quadratic in time. Don't forget the question. We are launching two objects in space. We have to find the velocity u2. What should be the velocity u2? So that at any point in space, the angle between them is 90. Or they are perpendicular to each other at any point in space. It's not always possible. तो वेलोसिटी ये जो u2 है एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर उस वेलोसिटी से कम होगा तो नहीं होगा at 90 with each other at any point in space. So the question is what should be the value of u2? मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज होगा, ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू होगा. So that at any point in space the angle between the two velocities is 90 with each other. Okay, now it is 6u2 minus 8u2t plus 100t square is equal to 0. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 50s are 100. So it is 50t square minus 4u2t plus 3u square is equal to 0. It is quadratic in time. So you can find the time here. Let us see how can we solve this problem mathematically. Let's find time because it is quadratic in time. So t equal to, that is 4u2 quadratic in time, the 4u2 plus minus root of square of this 16u square minus 4 into this, that is 600, 12 into 5, 60, 600 divided by 2a, that is 100. ये है टाइम का हमें मिला हमें टाइम. आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टाइम निकला इस टाइम के बाद, लेकिन बात यह है कि दिस टाइम शुड बी they should make angle with respect to each other 90 in real time, not in imaginary time. That means at least this should be greater than 0 or equal to 0. So for the condition for them to meet in space at an angle of 90 with each other is that the time they should meet in real time. अगर ये इमेजिनरी होगा मगर अगर ये नेगेटिव होगा मीन्स टाइम विल बी इमेजिनरी. दैट मीन्स आप उसको दे विल बी एट 90 डिग्रीज विद ईच अदर, वो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो. You cannot think in your imagination that they will meet at an angle of 90. They will meet at an angle of 90 only when this is real. कि ये imaginary हो गया with a negative sign inside, so that time means you cannot think of it. In physics, it is impossibility. Imaginary values in physics are terrible values. You understand my point? So that means in order to get real time in which they meet in space at an angle of 90 degrees, we have to make this 16u square minus 600 greater or equal to 0. Either this should be 0 or even greater than 0. So it has range of u. अब u का जो हम u2 का जो हम निकालेंगे वैल्यू, u2 है भाई, it is u2, u2 का जो वैल्यू है वो इस इक्वलिटी से जब मैं u2 का वैल्यू निकालूंगा उससे कम अगर होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल. You can't have the two velocities making angle 90 with each other. So what is u2 square? Is greater equal to 600 by 16. So 4 4 4 के 4 5 0 2 2 7 5. So u2 square is greater equal to 75 by 2, or u2 should be greater equal to root of 75 by 2, greater equal to root of 0.5. मतलब ये जो वेलोसिटी है
it should be greater than this or equal to this so that they can meet in space at an angle of 90 with each other. तो ये मैंने वेक्टर से इसलिए किया, और वेक्टर के थ्रू ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में होता है. It is the IIT level question. You please do it, and possibly this may be asked in IIT level or even at NEET level. But you can do it within a minute or within 1.5 minutes, but through this short derivation. Thank you.